Now let's move on to 34th problem now. तो ध्यान से अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ें. द पेंडुलम ऑफ सर्टन क्लॉक हैज टाइम पीरियड ऑफ 2.04 seconds. Time period is 2.04 seconds. This is the pendulum of certain clock. How fast or slow does clock run during 24 hours? 24 घंटे में यह क्लॉक कितना फास्ट है, कितना स्लो हो जाएगी. हम कहते हैं देखिए, व्हाट इज एरर इन टाइम? डेल्टा टी बाय टी इज 0.04 बाय 2. हर एक ऑसिलेशन में यह 0.04 सेकेंड से का ज्यादा समय. सो सिंस टाइम इज मोर, सिंस t is high, hence this clock run slow. क्योंकि पेंडुलम का टाइम हाई है, इसलिए यह क्लॉक धीमी चलेगी. यह 2.04 सेकेंड को 2 सेकेंड्स बताएगी. अब 24 आवर्स में कितने बार ऑसिलेशन होएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ डे is number of oscillation in a day is 24 hours 3600 seconds upon 2, because in each oscillation it takes 2 seconds. So this is the number of oscillation in a day. एक दिन में इतने oscillation होते हैं. And this pendulum watch and this clock run slow by 0.04 second in each oscillation. एक ऑसिलेशन में यहां इतना सेकेंड स्लो हो जाती है. सो दिस क्लॉक वुड बी स्लो बाय दिस मच सेकेंड. 24 इंटू 3600 upon 2 into 0.04 seconds per day. This clock is slow by this much seconds in a day. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. So this is 24 into 36 into 2 seconds. In order to solve it in minutes, 24 into 36 into 2 by 60 minutes. So this would give me 12 into 12, 24, 144 to 88 by 10 or 28.8 minutes. इतने मिनट से यह क्लॉक स्लो होगी. इट्स स्लोड बाय इन अ डे, पर अ डे. एक दिन में लगभग 29 मिनट से यह क्लॉक धीमी चलेगी. नाउ स्टार्ट रीडिंग 37th प्रॉब्लम. नाउ लेट्स डिस्कस 37th प्रॉब्लम. नाउ मैक्सिमम टेंशन in the string of an oscillating pendulum is double that of minimum tension. Find the angular amplitude. देखिए, पहले मैं मैक्सिमम टेंशन वाली कंडीशन इधर ड्रॉ करूंगा और मिनिमम टेंशन वाली कंडीशन को मैं इधर ड्रॉ करूंगा. मैं कहता हूं मैक्सिमम टेंशन हमेशा होता है when it's at mean position and it's moving with some velocity v0. This is the condition of maximum tension. क्यों होता है अभी बताता हूं. और मिनिमम टेंशन वाला कंडीशन होता है when it's at max amplitude condition, that is theta naught. इस समय पर मिनिमम टेंशन होता है और इस समय इसकी वेलोसिटी 0 होती है.
हम कहते हैं इस समय पर मिनिमम टेंशन क्यों है। मैं कलर चॉक से सिचुएशन को ड्रॉ करूंगा। इधर mg फोर्स और mg के दो कंपोनेंट, mg cos थीटा नॉट और इधर mg sin थीटा नॉट। Since its velocity is 0 at this point, hence no centrifugal force. While in this situation, mg and m v naught square by L. This minimum tension is mg cos theta naught, and this is the maximum tension, that is mg plus mv naught square by L. अब मैं इधर एक और बात बता दूं, एनर्जी कंजर्वेशन से हम v नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन पर आते आते एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखता हूं। इस सिचुएशन पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानता हूं, हाफ mv नॉट स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, हाफ mv नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kinetic energy plus potential energy at this point is mg, this is L minus L cos theta naught, L into 1 minus cos of theta naught. So I can write here mv naught square is equal to 2 mgl into 1 minus cos theta naught. So maximum tension can be written as mg plus L sin cancelled 2mg, this L and L cancelled, mv square की जगह मैं लिखा हूं 2mgl into 1 minus cos of theta naught. There is minimum tension and there is maximum tension, and this is that the ratio of the maximum tension is double that of minimum tension. तो minimum tension का दुगना कर देता हूं, this is 2mg cos of theta naught is equal to mg into 1 plus 2 into 1 minus cos of theta naught. mg and mg got cancelled and I will get 2 cos theta naught is equal to 1 plus 2 minus 2 cos theta naught. मैं इसे ट्रांसपोर्ट कर देता हूं, 4 cos theta naught is equal to 3 and cos theta naught equal to 3 by 4 or theta naught is equal to cos inverse of 3 by 4. Hence this is the answer. बड़े ध्यान से हमको सिर्फ यह देखना है कि मैक्सिमम टेंशन की यह कंडीशन सोचनी है कि मीन पोजीशन पर जब होएगा mg plus mv naught square by 2, mg is gravitational force, mv naught square by 2 is centrifugal force, because at this instant ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होएगा और यह टेंशन होएगा मैक्सिमम, और मिनिमम टेंशन होएगा at max amplitude. This is maximum tension at mean position, and this minimum tension would be at max displacement. Max displacement situation पर यह minimum tension, and that is mg cos theta. mg sin theta would provide restoring फोर्स और रेस्टोरिंग टॉर्क। फिर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों सिचुएशन पर इक्वेट कर दी
और mv0 की वैल्यू फिर मैंने मैक्सिमम टेंशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, और इस तरह से मुझे मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू mg के टर्म्स में दिखने लगी, और मिनिमम टेंशन की वैल्यू भी mg cos थीटा के टर्म में दिख रही है, और मैक्सिमम टेंशन को ट्वाइस ऑफ मिनिमम टेंशन कर दिया एंड आई सॉल्व इट। फटाफट देखिए। नाउ लेट्स डिस्कस 40th प्रॉब्लम। नाउ लेट्स डिस्कस दिस 40th प्रॉब्लम। सिंपल है या ग्रेविटेशन का नॉलेज है होना चाहिए बस। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज टेकन इन अ डीप माइन assuming for the time being the mine is 1600 किलोमीटर डीप। अरे बाप रे, 1600 किलोमीटर डीप माइन कभी होती नहीं है। इतने डीप में यदि कोई चला जाए ना तो जीवित ही नहीं रह सकता। एनीवे प्रॉब्लम बना दिया है, पर डीप माइन इज 1600 किलोमीटर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम देयर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। Now, we always know that time period is given by 2 pi under root of L by G. Length दे रखा है G। अब in the depth of Earth, gravitation का concept recall करना पड़ेगा। In the depth of H, acceleration due to gravity at the depth of H is given by G into 1 minus H by R. There is acceleration due to gravity at the depth of Earth. So I will write time period for the simple pendulum is 2 pi under root of L by gravity in depth would be G into 1 minus H by R. Here H is the depth and R is the radius. Solve it. Now you simply need to solve it. L की जगह 0.4 मीटर रख दीजिए, G की जगह 9.81 into 1 minus height H is 1600 upon 6400. So this would give me 1 by 4. 1 by 4 means 1 minus 0.25, 0.75. So time period would be 2 into 3.14 under root of 0.4 upon 9.81 into 0.75 seconds. Upon solving this would be the answer. जो लेंथ सेंटीमीटर में दिया है इसे हमने मीटर्स में सब्स्टिट्यूट करा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस इज ऑन द सरफेस, यह सरफेस पर टाइम पीरियड है, और डेप्थ h में ग्रेविटी हम जो है वह माइंस की जो डेप्थ है वहां पर जो ग्रेविटी होगी वह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड, नाउ लेट्स डिस्कस 42nd प्रॉब्लम।